last section we have covered how to make and how to create an enterprise structure. Enterprise structure generally consists of client, then a company, and then a company code, then a personal area, and then a personal sub area. If I repeat the enterprise structure once again, like the fundamentals of enterprise structure, so let me once again uh, pull that diagram in. So let's take this one. So in last couple of class, I have already explained this particular slide, what this slide is all about. So basically, whenever we have any kind of a organization working at a higher level of authority, that higher level of authority or independent unit generally is known as the client. Okay, and the country specific segregation of that particular company, that is like in this particular case, in this example, it is US and Germany. So that thing, the country specific segregation is generally known as the company code. Okay, and then after that, within those company code, we have different personal areas. Now, areas can be at a state wise also, at a county wise also. It depends from a company to company basis, like how they have configured their legacy system. I mean, in real time environment, how their system has been, in real time environment, how that organization has been built up or got configured. Okay, and within those personal area, we have different sub areas. Okay, so sub areas are nothing but the different departments like finance, HR, IT, purchasing, production. In this cases, there are few departments in Miami, few departments in San Diego, and then there are more number of departments in Dallas. Here in this cases, more number of departments are there in Heidelberg, and less number of departments are there in Hamburg. It also depends from a company to company basis that okay, where they actually want to go over there and build their manufacturing unit, if it is a manufacturing company, or it depends on to the market size as well कि उस कंपनी को कहाँ पे अपना एक्सपांशन ज़्यादा करना है. समटाइम्स जैसे आईटी इंडस्ट्री में देखने मिलता है कि पीपल टेंड कंपनीज टेंड टू हायर मोर इन locations like Hyderabad, Bangalore, Pune, Noida, instead of the tier 2 cities like let's say Indore, Ahmedabad, क्योंकि the resources are not there enough sometimes. So they had tend to have more departments in those number of cities and tend to have less number of departments in those other number of cities. Similarly, it works in the manufacturing sector as well. But in manufacturing sector, generally it's about the ठीक है कि if some company wanted to have ports or logistics nearby, so वो उस तरीके से अपनी planning करते हैं. Maybe they'll try to find something like maybe मुंबई जहाँ से या फिर or it could be coastal areas like Kolkata or another coastal areas that may be like okay Surat side, Porbandar side. So sometimes it depends from different company to company aspect. Okay, so that is all about the enterprise structure. Apart from enterprise structure, what we actually so we in an enterprise structure we have configured the client, company code, personal area, sub area in the last session. So let me just quickly show you what we have done. So first we went on to the SPRO. Then okay, so everything that we are doing this for this particular client, which is 001. In an SPRO, first of all, we created the company. Okay, or like we can directly create the company code also, whichever the way we feel comfortable. So for creating a company and a company code, we generally follow this field. In SPRO, we generally go over there and define things first. So after defining company and company code at a financial accounting level, then we go on to the human resource management for defining personal area and sub area. Personal area, sub area are nothing but this part. Again, the different geolocations. Okay, sorry, the different locations within geolocations and then the different departments that we want to create in the company. After creating that, what we can do
is we have to assign those things. So whenever we define personal area and sub area, or whenever we define company code or company within one particular client, we never assign those things. Okay, like I have created this one, ये मैंने क्रिएट तो कर लिया, बट मैंने अभी तक के कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया था कि ओके मायामी बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कंपनी कोड और हैम्बर्ग बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कंपनी कोड. So all that part generally happens in the assignment section. So in the assignment section, first you assign company code to a company, and then after that, in this section, you assign the personal area to the company code. While we have to consider, we have to note down one thing over here, that while creating a personal area, जब भी हम personal area create करते हैं, sorry, जब भी हम personal sub area create करते हैं, that is these different departments, we always have to select that okay, this personal sub area has to be created for this which particular personal area. तो पर्सनल एरिया सब एरिया के बीच में असाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. It directly happens at this level. So whenever I'll create a personal sub area, I'll double click over here. So it automatically asks me that okay, ये personal sub area जो create करना है, किस personal area के लिए create करना है. So it never goes on to the assignment section, like only in the case of personal area and sub area. So okay, now there is an important aspect of the controlling area in it. Okay, so this controlling area part, I'll explain you. There is this controlling area part. I'll explain you at a later end, because क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अपन करने वाले हैं उसकी अपन एक सिंगल क्लास रखेंगे. What we are basically doing today is we will learn about organization structure. Organization structure क्या होता है? And see, within an organization structure itself, there are 5 different entities. Those are generally known as the organization objects. Okay, now these objects that I'm talking about, ये जो organization के ये जो objects होते हैं, it is generally known as the backbone of the entire position management. आप बोल लो, या फिर job बोल लो, या recruitment बोल लो, या फिर other things as well. So we'll quickly get and understand like generally what is an organization structure and like how it is different from the enterprise structure. देखो, organization structure is always created keeping peoples in mind. ओके, एम्प्लॉइज को माइंड में रख के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स और फॉर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स, यू हायर पीपल or you terminate people or you create positions for people, or in a back end organization structure is directly assigned to the enterprise structure. Okay, so I know it's a little tough cookie to understand, but I'll provide you the necessary notes so that it will help you understand it better. But note down this thing: organization yes. Units consist of organization objects. Organization objects. Okay, while there are many organization objects, first of all, there are not only okay, let me write it down. While there are many organization objects, 5 are the most common and important one. Okay, which are those 5 organization objects? Okay, first one, organization unit, which is generally denoted by O in SAP. Next one is position.
In SAP, it is generally denoted by S. Next one is job. In SAP, it is generally denoted by IDC. Next one is cost center. Location reporting manager. No, that we will cover it within this only. But reporting manager is reporting manager is just a job title. Okay, so how do I explain? Department. Department generally comes under the organization unit itself. So Okay, cost center. person P, or it is also generally known as the employee. Okay, now understand this. These three organization units, these three organization units are generally created in while creating the organization itself. These three organization units are generally created while creating the organization itself. जब भी हम organization create करेंगे तो ये तीन यूनिट अपने आप उसके अंदर ही क्रिएट होती हैं. ओके, बाकी की ये जो दो यूनिट हैं, कॉस्ट सेंटर को क्रिएट करने के लिए मुझे अलग से एक फंडामेंटल अप्लाई करना पड़ता है, एंड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मैं PA40 के थ्रू हायर करता हूँ, और ऑटोमेटिकली वो सिस्टम के अंदर दिखना चालू हो जाते हैं. ओके, सो इट्स जस्ट द लिटिल थ्योरी पार्ट. आई नो समटाइम्स अभी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा व्हाट इज दिस थ्योरी, बट अभी अपन जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि ओके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एंड लाइक हाउ डू वी जनरली सेग्रीगेट इट. ओके, सो बेसिकली ये जितना भी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, आई क्रिएट अ डिफरेंट ऑर्ग यूनिट फॉर दैट. ओके, I'll create an org unit for this one. I'll create an org unit for this one. I'll create an org unit for this one. I'll create an org unit for this one, this one, this one, this one, this one, this one. तो जो O करके जो ऑब्जेक्ट है इन सभी के लिए मैं क्रिएट कर दूंगा. बट उनमें रिलेशनशिप ये होगा कि जैसे कि अब ये तीनों के तीनों जो ऑर्ग ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का, दीज विल बिहेव एज अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट. इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये होगा. फिर इन इन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये सब होंगे. फिर इन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये सब होगा. फिर इन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्लाइंट है, जिस क्लाइंट के अंदर हम वो सारा के सारा काम कर रहे हैं. ऐसा हम इसके लिए जनरली करते हैं ताकि हर एक लेवल पे हम पोजीशंस क्रिएट कर सकें सिस्टम के अंदर. कि ठीक है, अगर पेट्रोकेमिकल यूनिट है तो उसके अंदर मेरे को डायरेक्टर लेवल की पोजीशंस क्रिएट करनी है, तो वो डायरेक्टली मैं जाके वहाँ पे क्रिएट कर सकूँ. अगर पेट्रोकेमिकल इंडिया है तो उसके लिए मेरे को कुछ इंजीनियर लेवल की या जियोलॉजिस्ट लेवल की पोजीशंस क्रिएट करनी है, तो वो मैं जाके वहाँ पे क्रिएट कर सकूँ. अगर मेरे को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर सेल्स और उससे रिलेटेड पोजीशंस क्रिएट करनी है तो मैं वहाँ पे जाके क्रिएट कर सकूँ. सो दैट्स व्हाई वी बेसिकली क्रिएट द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स. Okay, now how to create the organization unit? Okay, there are different ways to create the organization units. How to create, sorry, organization structure in system. So there are basically different ways. जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, वी फॉलो दिस मेथड, सिंपल मेंटेनेंस. Okay, there is another one which is expert mode. There is another one which is like normal object creation type. There's a different name for it, but I'm going back again वही slash and वाली technique. I hope you guys must have gotten used to it. Slash n से मैं back जाता हूँ system के अंदर, and here I will search. So basically creating an organization unit is actually not an implementation task generally. ये users करते हैं, but again I mean it's not under the SPRO thing by any chance.
We are not doing any kind of a configuration. We are just simply creating an organization structure. So we have an expert mode, okay, general structure and a metrics one. Yeah, call it as a uh, general structure and a matrix one. Okay, see, simple maintenance is generally used is generally used during implementation. मतलब मैं स्क्रैच से क्रिएट करना चाह रहा हूँ. Okay, uh, this one and the other one, both both expert mode and general structure, both expert mode and general structure are used to change the existing configuration, to change the existing structure. मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो जनरली मैं सिंपल मेंटेनेंस मेथड यूज करूँगा. एंड जब भी मैं, अगर लेट्स से एक बार मैंने बना दिया और अगर मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं आगे जाके, तो जनरली आई कैन यूज द टी कोड ऑफ एक्सपर्ट मोड ईदर, और आई कैन यूज द टी कोड ऑफ जनरल स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स वन टू चेंज दैट. ओके, बट क्या मैं सिंपल मेंटेनेंस को ही यूज कर सकता हूँ क्या चेंज करने के लिए? हाँ, मैं कर सकता हूँ, बट इट बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू चेंज, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर मेरे को एक ही टाइम पे दिखाता है. सो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू चेंज in a real time environment. So you can also prefer expert mode while creating the organization structure from scratch, but general suggestion given by me, or like in most of the cases, people use simple maintenance to create the org structure during implementation. That's the more easiest way. Okay, so here it is, the simple maintenance structure. Once again, I will show you the navigation path. कुछ भी नहीं है, SAP easy access screen के अंदर मैं हूँ. And easy access screen के अंदर, again I'm explaining this one more time. I'm not going into SPRO. मैं SPRO में भी नहीं जा रहा हूँ. I'm not in SPRO. SPRO screen looks like that. I'm going back. I'm in easy access menu. Once again, I'll log off and I'll log in again. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ऑर्ग स्ट्रक्चर सर ने कहाँ पे क्रिएट किया था, मैं एसपीआरओ में ढूंढने नहीं बैठ जाऊं. सो आई मीन इजी एक्सेस मेनू, एंड हियर आई विल स्क्रॉल डाउन, human resource. Here I will scroll down again, organization management. Here I will scroll down into expert mode, and within the expert mode only I get this part, which is the simple maintenance. Okay, so PPOC underscore old is for create, PPOM underscore old is for change, PPOS underscore old is for display. Okay, तो अगर create, change और display के बीच में difference नहीं मालूम हो तो मैं explain कर देता हूँ एक और बाद में. Generally क्या हो रहा है यहाँ पे, in SAP, with most of the most of the functionalities in SAP, with the most of the functionalities कहाँ से अपन एक्सेस करते हैं? टी कोड के थ्रू, राइट? accessible by T code. So in SAP, with most of the functionalities, there are generally three ways. Generally, there are three options. Generally, there are three options.
ये खाली इसी केस में नहीं है, ये हर केस में होता है। एक तो ऑप्शन होगा क्रिएट करने का, जिसके लिए मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं। एक होगा चेंज करने का, एक होगा डिस्प्ले करने का। ओके, तीनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। लाइक अगेन डिस्प्ले करना मतलब मैं सिर्फ जाके देख रहा हूँ, मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऐसा इसके लिए किया जाता है कि प्रोडक्शन सर्वर जो होता है, जो कि एक बार मैंने क्लास में बताया था कि नॉट एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पीपल गेट एक्सेस फॉर द प्रोडक्शन सर्वर। तो जो प्रोडक्शन सर्वर आपके पास में होता है उसमें लोगों को सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस ही होता है। दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग ओवर देयर, दे कैन ओनली व्यू थिंग्स, सिर्फ देख सकते हैं वो, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। डेटा को देख सकते हैं कि ओके कौन सा डेटा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, चेंज नहीं कर सकते। जनरली डेवलपमेंट और क्वालिटी के अंदर चेंज वाला एक्सेस दिया जाता है। ओके, एंड ये क्रिएट वाला ऑप्शन भी उसी के अंदर दिया जाता है। सो डिस्प्ले, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अ सेग्रीगेशन इज ऑलरेडी देयर इन सिस्टम। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है? हर चीज़ के अंदर। लाइक अगर आप पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के टी कोड को देख लो, सो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के टी कोड्स जो कि इम्पोर्टेंट वन है, सो फॉर एन एग्जाम्पल PA10, PA30 and then PA20. So that is in the case of personal administration. Okay, अगर मैं जैसे org structure create करने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी कर रहे हैं अपन org structure, these are nothing but the T codes. Okay, these are nothing but the T codes. अगर जैसे मैं org structure के अंदर देखना चाह रहा हूँ, तो अभी जैसे अपन PPOC underscore old is for create, P, PPO PPOM underscore old is for change, ठीक है। PPOS underscore old is for display। ओके, तो अपन देखेंगे तीनों में डिफरेंस क्या है। सिमिलरली देर आर अदर टी कोड्स एज वेल, वो इन तीनों पैरामीटर के ऊपर ही चलते हैं। तो मेरे को स्क्रैच से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। सो आई एम इन द सिंपल मेंटेनेंस मोड ओवर हियर। आई विल क्लिक ऑन टू PPOC अंडरस्कोर ओल्ड। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पूछेगा कि क्या कंपनी का नाम देना है या फिर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को क्रिएट करना है। सो आई विल गिव द सेम नेम of the company which I've used earlier, that is Memud Life Software Private Limited. So I'll give the full name over here, and I'll give the short name over here. Now मेरे को वैलिडिटी पीरियड डिफाइन करनी है। व्हाट इज अ वैलिडिटी पीरियड? वैलिडिटी पीरियड इज दैट पीरियड जब से मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने SAP को इम्प्लीमेंट करना चालू किया था, या फिर इट डिपेंड्स ऑन टू माई क्लाइंट साइड कि उनको सिस्टम में रिकॉर्ड कब से शो करना है, कब से शो करवाना है। मे बी लेट्स से दे हैव स्टार्टेड देयर कंपनी इन 1990, so in such cases they can also tell me that okay, create the validity period of 1990. But on a safer side, let us take the validity period as of now from 1st of January 2020. Okay, you need to keep it as it is, overall structure, and then you can go over here and hit click over here. It will ask you to generate a transport। जो आपका ट्रांसपोर्ट चल रहा हो उसमें भी आप सेव कर सकते हो। बट जनरली अगर ऐसा कुछ शो नहीं करे, यू कैन गो ऑन टू द क्रिएट रिक्वेस्ट, कैन गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ओवर हियर कि आप क्या चेंज कर रहे हो। सो बेसिकली आई एम क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, you can click on save or you can click enter, and now you have a new request and you can right click it, and आपका जो changes होगा वो save हो जाएगा। So now see, once you save down your changes, you can see one thing over here. This particular thing is known as object ID। ये जो पर्टिकुलर चीज होती है ये ऑब्जेक्ट आईडी इसको कहते हैं। एंड किस तरह का ऑब्जेक्ट है? दिस ऑब्जेक्ट इज ओ, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑब्जेक्ट ओ। ओके, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑब्जेक्ट इज। बट या लेट्स नोट डाउन दिस थिंग ओवर हियर दैट
every every object is associated with an object ID. उसको एक ऑब्जेक्ट आईडी असाइन होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा उसको एक ऑब्जेक्ट आईडी असाइन होगा. ओके. नाउ सो ये तो मैंने यहाँ पे अभी एक ही क्रिएट किया है, बट व्हाट इज माय एंटरप्राइज स्ट्रक्चर? मेरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसा है? So I have to basically map my enterprise structure over here, or if I want, I can create other things as well within that. Okay, कि अलग अलग hiring structure के हिसाब से भी मैं चीज़ें create कर सकता हूँ. So let's say here I will create first of all two fields. So what I will do, I will select this one, this object ID. अब देखो, what remember what I have told you. ओके, दिस इज एन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, बट मेरे को क्या क्रिएट करना है? मेरे को इसी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का एक ऑर्ग स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि मैं मेरे एम्प्लॉयज को वहां पे जाके हायर कर सकूं और एम्प्लॉय रिलेटेड एक्टिविटीज उसके अंदर परफॉर्म कर सकूं. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आईडी ओवर हियर. पर्सन, लाइक जब भी अपन लाइक see employee P, this object person P can be CEO also, and this object person P can also be the administrator. It depends for which position I'm hiring this object person P. It depends from which position I'm hiring it for. Okay, so अब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ध्यान में रखना कि these may be the child objects of this as a parent object, and these may be the child object of this both as the parent object. Similarly, it follows the same in the entire enterprise structure or the formation that I am doing of an org structure. तो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट मुझे इसके अंदर क्रिएट करना है वो मैं कैसे करूँगा? सो आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस वन एंड आई विल गो अगेन ओवर हियर विच इज क्रिएट. तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे सारा के सारा मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके जितनी भी चीज़ें क्रिएट करूँगा मैं ऑर्ग यूनिट ही क्रिएट करूँगा. यहाँ पे अभी मैं कुछ पोजीशन वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. मैं जो भी यहाँ पे क्रिएट करूँगा ऑर्ग यूनिट ही क्रिएट करूँगा. अलग अलग ऑर्ग यूनिट्स क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पे. उनमें डिफरेंस क्या होगा कि खाली एक एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है. सो आई हैव सिलेक्टेड दिस वन. आई एम गोइंग ओवर हियर. द फर्स्ट वन दैट आई वांट टू क्रिएट इज द ओके रिलायंस. ओके, सो जैसे अपन इस केस में बात कर रहे हैं वेमुद लाइफ. सो लेट्स नेम इट एज BL India. And let's say this is a US entity, USA. I can click on save, right click it, and now एक ही parent object के अंदर I had now two child objects, okay, which are the two different entities. org object ही है ये. Okay, but now let's understand the relationship between them. देखो, ये भी org unit object ही है, ये भी org unit object ही है, but these objects are the sub org units. Okay, this is the main org unit. This object is the main org unit and these are the sub org unit. Sub क्यों है? क्योंकि ये इस particular के अंदर आते हैं, इसके ऊपर कोई नहीं है. This is the main org unit. Okay, and ऐसा सेग्रीगेशन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से अगर मुझे डायरेक्टर लेवल की कुछ पोजीशंस क्रिएट करना हो, मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO, सो आई कैन क्रिएट डायरेक्टली एट दिस लेवल. आई डोंट हैव टू क्रिएट दैट दोस पोजीशंस एट दिस लेवल. So that's why generally this is the entire purpose of the organization structure in SAP, to create that sort of a bifurcation, क्योंकि वो enterprise structure पे नहीं किया जा सकता है. Okay, so here we don't want to talk anything about US. We all the configurations that we are doing is generally doing for India, so we'll expand this one. So now अब मेरे को India के अंदर ही बाकी सारी चीज़ें create करनी है. So I'll select this one over here. I'll create new and I'll again give the short abbreviation, and let's say I'm first creating it for Gujarat. Similarly, I'm doing it for let's say Maharashtra.
Similarly, let's say I want to do it again for Karnataka. I'll save this one, right click it. And now I've created a three separate org units under this org unit, and which is the main, which this is the sub org unit of this org unit. Okay. Now within the Gujarat itself, I now can create the different departments. Let's say I want to create, mm, let's call it as VLGJ, and here I'm saying it's an HR department. So VLGJ, or let's call it as HR department VLGJ. Let's say I'm creating a finance department now. So let's call it as finance department VLGJ. Let's say I want to create a sales department also over here. So let's call it as VLGJ SL. So sales department VLSD. Oh, sorry, VLGJ. I'll hit enter and save it. And now within Gujarat only, I have created these three other sub org units. Okay, so it can go on and on. Like मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी अलग अलग sub org units create कर सकता हूँ. So it depends like how generally the company wanted to do their configuration accordingly. So here in Maharashtra, let's say uh, लेट्स से यहाँ पे इनकी एक ही एंटिटी थी. ठीक है, अब मैं महाराष्ट्र के अंदर देखो किस तरह का अलग कुछ सेग्रीगेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो इन महाराष्ट्र आई वांट टू क्रिएट सिटीज फर्स्ट. व्हाट द क्लाइंट इज टेलिंग मी कि महाराष्ट्र में हमारा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो आप सिटीज क्रिएट करके उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दो. सो विद इन महाराष्ट्र ओनली फॉर महाराष्ट्र आई एम क्रिएटिंग डिफरेंट सिटीज फर्स्ट. ओके, सो आई एम सेइंग दिस इज VL Mumbai, VL VL. So I've created three cities first in Maharashtra, and now I'm gonna go over there and create different departments in this one. So let's first take Mumbai. And let's say I'm creating VLMU um, HR department VLMU Mumbai MH VLMU PD production department VL Mumbai MH. So ये दो डिपार्टमेंट मैंने मुंबई में क्रिएट कर दिया है यहाँ पे. Okay, so see this org structure is now different and this org structure is now different, but okay, so but Maharashtra and Gujarat they both report to India. मतलब अगर मैं इसके अंदर जब भी इन org structures के अंदर employees भी hire करूँगा, so they'll report to this entity, and these both of these entities, that is USA and India, will report to the main entity which I've defined it over here. So this is again I've defined it for Mumbai, and let's say I want to create the same thing in, let's say in Nagpur they have R&D department. Uh, Zonal R&D. So I want to create, let's say, one department over here as of now. And now let's say
in okay, so I can collapse it. Let's say now in Pune, I want to again create only for let's say operations VLPUOPER operations. Hit enter and now save it. Okay, so now let me collapse this one and let's try to understand what we have created as of now. So we have created the first main org unit. सबसे पहले अपन ने main org unit create की थी जहाँ पे अपन ने validity period ये दिया था. And then in that main org unit, then we have created two different entities. One is for India, another one is for USA. Within India, we have created three different entities. That is the different sub locations we can say are Gujarat, Maharashtra, and Karnataka. Within those entry, first I've taken Gujarat and I've created let's say HR department directly over there. क्योंकि मैं यहाँ पे define करना चाह रहा हूँ कि गुजरात में सिर्फ एक ही मेरी कंपनी की लोकेशन है. Let's say that is Ahmedabad. So I don't want to expand it further over there. So I've created these three departments generally over there. Okay. But here Maharashtra में my expansion is more. So that's why I've segregated it as per the city basis. Okay. So I first created Mumbai, Nagpur, Pune, and within those I've created these different departments. Within those I've created these different departments. Now let's say in the Karnataka one, I don't have much over there. I just have only IT department over there. So VLKARN IT department. Let's say it's in Bangalore. So I've just created a single entity over here. Okay. अच्छा और अच्छा ये कौन सी entity है? All of them are the organization units only. सारे के सारे organization entity ही हैं. I have not touched upon to. I have not. Okay, let me mention it over here. O as an organization unit. S as in position. C as in jobs. K as in cost center. P as in person. सो अभी तक के सिर्फ मैंने ऑर्ग यूनिट ही क्रिएट किया है. मैंने कुछ और क्रिएट नहीं किया है अभी तक के. यहाँ पे ना मैंने पोजीशंस असाइन किए, ना यहाँ पे मैंने जॉब्स असाइन किए, ना मैंने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर असाइन किया, ना मैंने यहाँ पे पर्सन असाइन किया. आई हैव ओनली क्रिएटेड पोजीशन एज ऑफ नाउ. पोजीशन. ओके. तो जैसे ही मेरा ऑर्ग यूनिट एक बार बन जाता है, जैसे ये लेट्स से दिस इज माय ऑर्ग यूनिट एज ऑफ नाउ. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. लेट्स से आई वांट टू असाइन अ पोजीशन. Let's say now I want to go over there and assign a position for these different org unit. Let's say मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को 10 लोगों की position assign करनी है. 9 of them will be the board of directors and one will be the CEO. Okay. Or let's say one is CEO, one is CTO, one is COO, and then 7 of them are the board of directors. यहाँ पे मुझे ये 10 positions create करनी है. Okay. तो वो मैं कैसे करूँगा? तो जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड चेंज. आई फर्स्ट हैव सिलेक्टेड दिस वन कि इसी के लिए अभी मुझे क्रिएट करना है. आई कैन ईदर गो टू या यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखेगा विच इज नोन एज स्टाफ असाइनमेंट. गो टू में भी मुझे मिल जाएगा या यहाँ पे भी मैं उसको देख सकता हूँ. इट इज नोन एज स्टाफ असाइनमेंट. ओके. सो आई विल सिलेक्ट दिस वन एंड आई विल गो ऑन टू द स्टाफ असाइनमेंट. I'll click staff assignment and now I can see there is a thing which is called as position, create position. दिख रहा है मुझे create position.
Guys, please answer. Can we see create position? Yeah, so Yes, no. we'll click on to create position, and now it will first tell me कि ठीक है कोई जॉब है कि नहीं है उसके लिए, और you want to create a job. जनरली मैं पोजीशन विदाउट जॉब भी क्रिएट कर सकता हूँ, एंड जनरली मैं पोजीशन विथ जॉब भी क्रिएट कर सकता हूँ. तो लेट्स से फर्स्ट let me create the different types of jobs. Okay, so let's say I want to create it. First is the CEO. Next one is the, let's say, board of directors, or let's say simply abbreviation we can give BRD, board of directors. The next abbreviation we can give is, let's say, CTO, chief of chief technical officer. Assistant manager. And That we have to think ki, okay, yeah, good point. If we want, we can create an assistant manager over here itself, and if we want, we can create assistant manager over there also. If we want, we can create a receptionist also over here. So let's good point. Let's create an assistant manager as well over there. And ASM. Save. Now see, these are the different jobs that I have created. Now see, these are the different jobs that I have created. देखो अब जॉब का पर्पस क्या होता है. जब भी मैं यहाँ पे जाके एट CEO टाइप करूँगा, सो आई विल गेट द, ओके लेट्स इरेज दिस वन. CEO टाइप करूंगा, एंड इफ आई हिट एंटर, जैसे ही मैं हिट एंटर करूंगा तो यहाँ पे वो एक पोजीशन का सिनोनिम मुझे दे देगा. ओके, सो डिफरेंट जॉब्स आर जनरली क्रिएटेड टू सेग्रीगेट द थिंग्स. ठीक है, कभी कभी किसी कंपनी में क्या होता है कि इवन बिजनेस एनालिस्ट ही होते हैं, बट उनको टाइटल दिया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर generally. Okay, so jobs are for those purposes, just to create a common abbreviation between among the different types of category of jobs that you want to create in your company. Okay, so but position is something that is generally hold by the person. Okay, एक पर्सन होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो पोजीशन को होल्ड करता है, जॉब को होल्ड नहीं करता है. So in SAP, it's very very important to understand that part. So okay, first we want to create a CEO, position of a CEO, एंड जॉब अपन ने क्रिएट कर ली 5 या 6 अलग अलग तरह की. कितनी पोजीशन मुझे क्रिएट करनी है? एक ही क्रिएट करनी है. सो आई कैन क्लिक ऑन सेव एंड सी. सो नाउ कैन यू सी देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट ओवर हियर. अच्छा, ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एस. what it means that this object type is position. दिस ऑब्जेक्ट टाइप इज पोजीशन. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर क्रिएट किया गया है? मेन ऑर्ग यूनिट के अंदर. मेन ऑर्ग यूनिट. तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मेन ऑर्ग यूनिट के अंदर मैंने एक पोजीशन निकाली है विच इज फॉर सीईओ. अब इसको कोई ना कोई पर्सन आके एक्वायर करेगा, इस पे अलाइंड होगा और होल्ड करेगा इस पोजीशन को. ओके, नाउ दैट व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ अ जॉब दैट आई वांट टू क्रिएट, अदर टाइप ऑफ पोजीशन दैट आई वांट टू क्रिएट. आई विल अगेन सेलेक्ट दिस वन, आई विल गो ऑन टू द पोजीशन, and the other one that I've created, COO. I'll hit enter, and now I have Chief of Operating Officer. So ये भी मेरे को एक ही पोजीशन क्रिएट करनी है. So I'll save this one, and now I have 2 positions एक ही org unit के अंदर. So I'll select this one, I'll create another position at BRD. Okay, I'm saying that these are the board of directors, and मुझे चाहिए, let's say I need a 5 board of directors. Save. And now I've created 5 of these positions. यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कि कितनी positions मुझे create करनी है. I've created 5 of those positions.
ये सारी के सारी पोजीशंस ध्यान रखना है इस चीज के अंदर, ये सारी के सारी पोजीशंस इस मेन ऑर्ग यूनिट के अंदर आ रही है, इसके अंदर नहीं आएगी। ये इंडिया लेवल पे या यूएसए लेवल पे या गुजरात लेवल पे तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से पोजीशंस क्रिएट करूंगा। बिकॉज सी what is a C level positions, what like do you know, like C level executives we call it as a, so these are the C level positions that I'm creating, hierarchy number 1. So again I'll select this one, I want to create a CTO now. Naming convention, anything that you can give, abbreviation वगैरह, but I just wanted to give it in this way, so that's why I've just taken it as naming convention. You can change it. So एक ही पोजीशन मुझे क्रिएट करनी है, I'll hit enter and now I have one CTO position, and then I want to create one more position which is assistant manager. एक क्रिएट करूं या दो करूं? So I can decide like how many positions I want to create, 100, 200, I can give n number of positions. So let's say one only. So now these are the positions that I've created for the main org unit. Okay, the main org unit. Now coming back to the sub org unit. Now here I want to create a different type of jobs over here. Let's say I want to first create. So this is a country level segregation that I'm doing. Okay, so now let's call it as director, and then simply we can give an abbreviation or name as director, or we can also give it as global head. Global head of operations. So this is again one another type of job that I'm creating. Another one I'm creating, let's say RGM. Any kind of a abbreviation you can give. इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि you have to give it in this way only, but I'm just giving it so that I can remember these things. So this one I'm calling it as a regional manager. Regional manager. Save. So again, the two different types of jobs that I've created. One is a global head. So GHD. Now मैं कहाँ create करना चाह रहा हूँ, मैं इसके लिए create करना चाह रहा हूँ. So as of now I want to create only single position for this one, and I can give a name global head of operations in India. So this one, within this one I've created this one, global head of operations in India. And here I can take this one also, and now I can again go back to the position at GHD, hit enter, and I'm saying this is the global head of operations, single position only, this is for US. So मैंने एक पोजीशन यहाँ पे यूएस के लिए भी अलग से क्रिएट कर दी. Now see, what I want to create next is actually the regional manager. तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तीन अलग अलग साइट्स हैं, यहाँ पे मेरे को regional managers कुछ create करना है. So at RGM. So okay, now regional manager of what? I'm saying this is for Gujarat. So regional manager of Gujarat is created under this one. And similarly for this one, I'll create the different regional managers. This is for Maharashtra. एक सिंगल रीजनल मैनेजर मुझे इसके अंदर क्रिएट करना है. सो महाराष्ट्र के लिए भी मैंने क्रिएट कर लिया. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट द डिफरेंट पोजीशंस. जैसे आप बोल रहे थे कि एचआर एग्जीक्यूटिव्स, असिस्टेंट्स, फाइनेंस कंसल्टेंट्स,
or financial reporting consultants. Under these different units I can create those positions as well. IT engineers, यहाँ पे जहाँ पे अपन IT division बना रहे हैं, so we can create a different such positions over there, over here, which will directly come under a regional manager. Now the regional manager will come under global head of operations of India. Now the global head of operations, both the global head of operations will come under or will directly report to CTO, or it can they can also report to CEO, they can also report to chief of operating officer. We can decide it uh, as per our own convenience कि किसको अपन को वो assign करना है. Okay, and whenever we will hire any people in this, then automatically, then by that time automatically reporting structure खुद में खुद बन जाएगा. Okay, so tomorrow again I will show you the reporting structure कि reporting structure कैसा होता है. But here we, that's how we generally create the different types of position and different types of objects under SAP. So this one is for Karnataka. ये तो अभी कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ डेमो, मतलब बट इन अ रियल टाइम एनवायरनमेंट द स्ट्रक्चर इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग. दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग एंड इट कंसिस्ट ऑफ, लेट्स से अगर किसी किसी के एम्प्लॉइज 9,000 है, सो इट कैन reach up to 9,000, 10,000 employees only, or 10,000 positions in the structure only. But उस केस में फिर आप फिल्टर कैसे करोगे? So generally you will take this object ID, or generally you will take this different departments, and then you have to filter it out from here with the help of research कि okay, कौन सा org unit मुझे देखना है, कौन सी position मुझे देखनी है. Okay, so that's why this method, जब मैं अभी जैसे अभी मैं यहाँ पे सब scratch से create कर रहा था, so this method is only recommended for the first point of time only, which I have explained it in this scenario. ये जो मेथड है, इट जनरली इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ओनली. बट आगे जाके मुझे जो भी चेंजेस करने होंगे, द अदर मेथड्स आर स्लाइटली इजियर वंस, अगर मेरे को एकदम से जाके किसी ऑब्जेक्ट के अंदर देखना है तो. एंड व्हाट आई कैन डू फॉर दैट, आई कैन टेक दिस ऑब्जेक्ट्स आईडी एज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, these object IDs as part of the consideration. Okay, so any doubt in this part? No, sir. ठीक है, तो क्या किया है मैंने, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. इन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आई हैव जस्ट सिंपली क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर विद इन द क्लाइंट. ओके, हियर व्हाट आई एम डूइंग, उसी स्ट्रक्चर को मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसके लिए अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग होल्डर्स को क्रिएट करना है, जो कि उन पोजीशंस को अक्वायर करेंगे. सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. Okay, so maybe you can try that if you've got the access till now or not. I'm not sure what is going on. I've also spoken to Vaishali ma'am. But if you feel any kind of a problem with this one, let me know. And again, everything I've created in this part only. So this, for this today's lecture, you don't have to go into the SPRO. जो अपन ने बात की थी, you don't have to go to SPRO. It is generally created at the end user screen only, in the easy access menu only. Okay, so you can follow this menu path, or you can follow this T code and directly write this T code over here, and you can execute the things from here directly.